Chapter 1 Reproduction in Organisms. Each and every organism can live only for a certain period of time. The period from birth to the natural death of an organism represents its lifespan. Lifespans of a few organisms are given in Figure 1.1. अध्याय 1 संगठन में सुधार प्रत्येक जीव एक निश्चित अवधि तक ही जीवित रह सकता है। किसी जीव की जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवधि उसके जीवन काल का प्रतिनिधित्व करती है। जीवन स्पैन्स के एक कुछ जीवों चित्र में दिए गए हैं। 1.1 Figure 1.1 Approximate lifespans of some organisms. Several other organisms are drawn for which you should find out their lifespans and write in the spaces provided. Examine the lifespans of organisms represented in the figure 1.1. Isn't it both interesting and intriguing to note that it may be as short as a few days or as long as a few thousand years? Between these two extremes are the lifespans of most other living organisms. कई अन्य जीवों कर रहे हैं तैयार करने के लिए जो आप खोजना चाहिए बाहर उनके जीवन काल और में लिखने प्रदान की रिक्त स्थान चित्र 1.1 में प्रदर्शित जीवों के जीवन काल की जांच करें। ये दोनों नहीं है दिलचस्प और टिप्पणी है कि ये हो सकता है के लिए पेचीदा हो के रूप में कम के रूप में एक कुछ दिनों या के रूप में लंबे समय के रूप में कुछ हजार साल इन दो चरम सीमाओं के बीच कर रहे हैं। अधिकांश अन्य रहने वाले जीवों के जीवन काल You may note that lifespans of organisms are not necessarily correlated with their sizes. The sizes of crows and parrots are not very different, yet their lifespans show a wide difference. Similarly, a mango tree has a much shorter lifespan as compared to a peepal tree. Whatever be the lifespan, death of every individual organism is a certainty, that is, no individual is immortal, except single-celled organisms. आप ध्यान दें कि जीवों के जीवन काल आवश्यक रूप से उनके आकारों के साथ सहसंबंधित नहीं है कि आकार कौवे और तोते हैं बहुत अलग नहीं अभी तक अपने जीवन काल को दिखाने के लिए एक व्यापक अंतर है। इसी तरह एक आम की पेड़ है एक बहुत छोटा जीवन काल के रूप में एक की तुलना में पीपल के पेड़ जो भी जीवन अवधि हो। प्रत्येक व्यक्ति जीव की मृत्यु एक निश्चितता है अर्थात एकल कोशिका जीवों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति अमर नहीं है। Why do we say there is no natural death in single-celled organisms? Given this reality, have you ever wondered how vast number of plant and animal species have existed on Earth for several thousands of years? There must be some processes in living organisms that ensure this continuity. Yes, we are talking about reproduction, something that we take for granted. क्यों हम कहते हैं कि वहाँ कोई प्राकृतिक में मौत एक कोशिकीय जीवों इस वास्तविकता को देखते हुए क्या आपने कभी सोचा है कि कई हजारों वर्षों से पृथ्वी पर पौधों और जानवरों की प्रजातियों की कितनी बड़ी संख्या मौजूद है। जीवित जीवों में कुछ प्रक्रियाएं होनी चाहिए जो इस निरंतरता को सुनिश्चित करती हैं। हाँ, हम प्रजनन के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा जो हम प्रदान करते हैं। Reproduction is defined as a biological process in which an organism gives rise to young ones, offspring, similar to itself. The offspring grow, mature and in turn produce new offspring. Thus, there is a cycle of birth, growth and death. Reproduction enables the continuity of the species, generation after generation. प्रजनन को एक जैविक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें एक जीव अपने जैसे युवा वंश को जन्म देता है। वंश बढ़ता है, परिपक्व होता है और बदले में नई संतान पैदा करता है। इस प्रकार जन्म, वृद्धि और मृत्यु का एक चक्र है। प्रजनन प्रजातियों की निरंतरता को सक्षम बनाता है, पीढ़ी के बाद पीढ़ी। You will study later in Chapter 5, Principles of Inheritance and Variation, how genetic variation is created and inherited during reproduction. आप बाद में अध्याय 5 विरासत के सिद्धांतों में अध्ययन करेगा और रूपांतर कैसे आनुवंशिक परिवर्तन है बनाया और के दौरान विरासत में मिला प्रजनन।
There is a large diversity in the biological world, and each organism has evolved its own mechanism to multiply and produce offspring. The organism's habitat, its internal physiology, and several other factors are collectively responsible for how it reproduces. Based on whether there is participation of one organism or two in the process of reproduction, it is of two types. वहाँ है एक जैविक दुनिया में बड़ी विविधता और प्रत्येक जीव के लिए अपने स्वयं के तंत्र विकसित किया गया है। गुणा और उत्पादन वंश जीव का आवास, उसके आंतरिक शरीर विज्ञान और कई अन्य कारक सामूहिक रूप से इसके पुनः निर्माण के लिए जिम्मेदार है। इस आधार पर कि प्रजनन की प्रक्रिया में एक जीव या दो की भागीदारी है। ये दो प्रकार का है। When offspring is produced by a single parent with or without the involvement of gamete formation, the reproduction is asexual. When two parents, opposite sex, participate in the reproductive process and also involve fusion of male and female gametes, it is called sexual reproduction. जब संतान एक एकल माता पिता द्वारा या गैमीट गठन की भागीदारी के बिना उत्पन्न होती है, तो प्रजनन लैंगिक होता है। जब दो माता पिता विपरीत लिंग प्रजनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं और इसमें नर और मादा युग्मकों का संलयन भी शामिल होता है, तो इसे लैंगिक प्रजनन कहते हैं।